सर एग्जाम में कब तक आएगा? Okay, you can see here. What? सर वहीं तक हम डाल देंगे क्वेश्चन क्या आपका तो 2 क्लास टेस्ट होगा, ठीक है। हम ये सोच रहे हैं कि आपका अगर 50% हम सिलेबस के बारे में सोचेंगे तो आपका मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 आना चाहिए, समझे, क्लास टेस्ट 1 में। मगर तब तक हमारा मॉड्यूल 3 भी खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो। तो हम एक सर चीज करते हैं कि हम ये मान के चलते हैं कि सपोज आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा या ऑफलाइन एग्जाम होगा, कुछ गारंटी नहीं। जो हम अभी ऑनलाइन के लिए अटेंड करेंगे सेमेस्टर, सॉरी, जो क्लास टेस्ट 1, तो आपका मोर क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम मॉड्यूल 3 एंड मॉड्यूल 4। तो आपका सिलेबस रहेगा क्लास टेस्ट 1 के लिए मॉड्यूल 1 से लेके मॉड्यूल 3 के एंड तक, यानी कि मॉड्यूल 1 से मॉड्यूल 3, समझे रे। All Yes, sir. questions are of multiple choice type, and for your information, let me clear that you will get at least 40% of the question from quiz and surprise in your class test 1. सर न्यूमेरिकल्स भी होंगे? Get it or not? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes. Am I audible? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Oh, there is some. Okay, now am I audible? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Oh, okay. Okay. So actually, I plan to put module 3 modules MCQ question on your class test 1, and in class test 2, if it will happen in online mode also, I will put module online examination online in class test होगा, यानी कि वो it is only your MCQ type. सर Okay, न्यूमेरिकल्स होंगे या नहीं? just wait. Any more? Any question? न्यूमेरिकल्स होंगे? Yes, numerical is there. The way it appears in your last surprise and quiz test, then the pattern will be same, and the standard of the question will also same. And for your information of all that, 40% of a quiz and surprise question will be repeated in your class test 1. You get it or not? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. That means it is easy to score 12 at least. My intention is that one. Okay, that all should pass in that class test 1. If you are getting 10 to 12 questions from your quiz and surprise, so I think it is easier to pass in that paper. Yes or no? Yes. Yes, Yes, sir. sir. यस सर। Okay. So that is my objective. So this is our syllabus, and we are at the end of our syllabus module 3. Okay, and after this, your coupling is there, coupling, clutch, brake is there. Actually, belt, gear drive is there. Actually, chain drive was not in your syllabus, but still we covered as it is a power transmission mode. So we will discuss today gear drive and complete that gear drive. Then we will shift to coupling, clutch, and brake in the next class. So let's discuss. Don't waste the time. Actually, this is a gear and gear train part of your syllabus, which is actually gear train is in your syllabus. We have discussed what is gear and what are its types. Let's discuss it so that you will get a clear
structure. Gear is these are the two-head cylindrical wheel used for transmitting mechanical power from one shaft to another, and several types of gears are there. I repeatedly told you, remember all these gears: spur gear, helical gear, bevel gear, and worm gear. Okay, this is actually gear, one gear. Here you can see spur gear looks like, as already discussed. Able to identify it or not? Yes, sir. How that helical gears looks like, you can see. And this is your bevel gear. Able to find it? Shafts are not parallel. And this is worm gear. Okay. So basically the gear materials or the gear is made up of cast iron or alloy steel. Okay. This is the terminology of gear we have discussed in the previous class. What is pitch, circle dia or circular pitch? What is diametrical pitch? What is module? Okay. What is that top, land or face width? And what is that space width? Already discussed. This is not no need to repeat. This is the pitch circle diameter. Circular pitch as defined earlier, it is pi d by n, pi by p or pi m. This is already over, so I just want to. Now these things we have to discuss today. What is gear train? Okay. So sometimes two or more gears are made to mess with each other to transmit power from one shaft to other, and such a combination is called a gear train or train of two-thread wheels. Okay. So gear train is that when two or more gears are messed with each other to transmit power from one shaft to other, it is called your gear train. Nature of the train used depends upon the velocity ratio required and the relative position of the axis of the shaft. Suppose if you are having that sir, which gear you have to put in your train, so it is depend upon how much velocity ratio you require. Okay, and also what is the relative position of the shaft. Yeah, types of gear train. You remember this one, very important one. I have to cover it. Okay. So here you can see these are the types of gear train. One is simple gear train, compound gear train, riveted gear train, and epicyclic gear train. Okay. So what is the difference between all four types of this one? In first three types of gear train, the axis of the shaft over which gears are mounted are fixed relative to each other. But in case of epicyclic gear train, the axis of the shaft on which the gears are mounted may move relative to the fixed axis. How it looks, you can see simple gear train. In simple gear train, there is only one gear on each shaft. You can see it. It is a cross-sectional view, yes. Now able to see. So as shown in figure, here it is called your simple gear train. The gears are represented by pitch circle. You can see one is driver and another is driven. Driven is also called follower. When the distance between two shafts is small, the two gears 1 and 2 are made to mesh with each other. For the previous class, and also you are able to see from this diagram that a driver and driven gears are moving opposite to each other. So in figure 8 is a two shafts with the two gear. That means here power need to be transmitted through a very small distance. So that's why we put that a gear train there. Another in one is that there is a three shaft is 1 to gear 2, then gear 2 to gear 3, gear 2 to 3 to gear 4. That means total 4 gears are there. And you can see the gear. Then in figure 3 or C, you can see that the distance between that driver and the driven gear, or that means the shaft between which power is need to be transmitted are at a larger distance. So that's why we have to put intermediate shaft along with gears, that is called idle gear. Okay. So always remember, as gear 1 drives the gear 2, so gear 1 is called your driver
and gear 2 is called diagram of a simple gear train. Okay. Get it or not? डायग्राम आ सकता है, क्वेश्चन है अगर अपलाइन आप अपियर कर रहे हो. So if we Yes, sir. derive the if we derive the velocity ratio is defined by n2 by n1. So if n1 is the speed of a driver gear, always remember the gear which drives the other, the first gear is called driver, otherwise called follower or driven. N2 is the speed of the gear 2 in RPM. T1 is the number of teeth. Never forget T was a T is a thickness in case of a belt drive. What is T is a number of teeth in a gear drive. Okay. And T2 is the number of teeth on gear 2. So since the speed ratio of a gear train is the ratio of the speed of the driver to speed of the driven, and the ratio of speed of any pair of gear in mesh is the inverse of their number of teeth. So therefore we can write N1 by N2 is equal to D2 by D1 is equal to T2 by T1. So you can see this speed of the driven or follow to the speed of the driver is known as your train value of the gear train. This one is called your speed ratio. Just reverse is called your train value. You can see N1 by N2 is called your speed ratio, whereas the N2 by N1 is called your train value. This is the in gear drive. You can also take the screenshot of this page. Very important from examination point of view. Move to the next slide. From the above two equation, we conclude that the train value is the reciprocal of speed ratio. Yes or no? Yes, sir. Okay. Move to the next one. Simple gear train. In sometimes the distance between gear is too large. So what happens in that case? The motion from one gear to another in first type may be transmitted by either of the two methods by providing a large sized gear. Or suppose the shaft between the two, distance between the two gear where power need to be transmitted is too large. So what we have to make? We have to either increase the size of the gear. Yes or no? That is one alternative. And second one is that we providing one or more intermediate gear. You can move to back to the previous slide. You can find here. You can see. Suppose in figure C, you can see figure C. So your driver gear and the driven gear is at a large distance. So if I want to transmit power from gear 1 to gear 2 or that shaft to other shaft, what I have to make? One arrangement is that I can provide 2 and 3 intermediate gears in between them. Otherwise, I have to make gear 1 so large that its teeth come in contact with the driven gear. This is the only possibility lies with us. Okay, but what we follow, we will discuss. So here, when power is transmitted from one gear to another, when both are present at a large distance, only way is there, only two method is there by providing the large sized gear or by providing one or more intermediate gear. So suppose you think that sir, this type of arrangement we can do by providing a large sized gear, but it is very inconvenient and also uneconomical. You have to make a large sized gear. It is not, I think, it is convenient. Whereas the second method, providing one or intermediate gear, is very common, convenient, and economical. Okay. So wherever you will find, whether in industry, whether in your shops, local shops also you find when there is a power transmission takes place between gears or through the gear drive and both gears are at a larger distance, better to provide intermediate gear
Okay, than providing a large sized gear. Note, when number of intermediate gears are odd, the motion of both the gear, driver and the driven are looks like. Number of intermediate gears are even, the motion of the driven or follower will be opposite to the direction of driver. You can see, just go back to that previous slide. Uh, you can see, are you able to see this slide or not? Are all you able to see it or not? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. So concentrate on figure B. Are you able to see it? Yes, sir. Yes. When we provide one intermediate gear between a driver and a driven, what you find here? Both driver and Driver the and driven driven are same rotate direction. in the Same same direction. direction. Rotate Yes in or same no? Yes, Yes, sir. sir. direction. Yes, sir. And when there are the even number of intermediate gear, what you find? Driver and the driven are rotating in opposite direction. Yes or Opposite no? direction. Yes. Yes, sir. Yes, sir. This is the thing you have to mark it. Okay. So this is the things you have to remember related to simple gear train. So now if we consider a simple gear with one intermediate gear here we are discussing here 3.1b what we already shown through their diagram. So let N1 is the speed of a driver, N2 is the speed of driven. Oh sorry. N2 is the N3 is the speed of driven gear in RPM. And if you are taking T1, T2, T3 are corresponding number of teeths on each gear. So since gear 1 is in a mess with gear 2, so we can write the speed ratio as N1 by N2 equal to T2 by T1. Can we write it or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. As a gear 1 and gear 2 are in contact with each other. Similarly, gear 2 and gear 3 are also in contact with each other. Yes or no? So if we rewrite the same speed ratio for the gear 2 and 3, we can also write N3 is equal to T3 by T2. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, So now in the next step, what I have to do, I have to combine the speed ratio of the gear train. Now that means what you are finding now, it is for gear. First you take two gear 1 and 2, then you take 2 and 3. So both 1, 2 and 3 constitute your gear train or not? Yes, sir. Yes, sir. So now we are calculating speed ratio for gear train. So speed ratio of the gear train as shown in figure is obtained by multiplying equation 1 and 2. Gear 1 and 2. So after multiplication you can see N1 by N2 into N2 by N3 is equal to T2 by T1 into T3 by T2. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Move to the next one. Can we cancel the T2, N2 from each side? Yes, sir. Yes, sir. So after cancelling that term N2 from left hand side and T2 from right hand side, Yes. okay, that means you can calculate by speed of the driver divided by speed of the driven is equal to number of teeth on driven is equal to number of teeth on driver. So what is if you T1? Yes or no? So the same way, that means suppose you have to transmit power through a not very large distance. If it is large distance through which if we would need power to transmit, we have to use belt drive. Okay. So when there is distance between two shafts is shorter, we are using your gear drive. So that gear drive, if we put one or two idle gear, it will not going to affect to the final expression of that speed ratio. I can conclude it or not?
So Yes, if sir. a situation demands, we can also insert 2 to 3 intermediate gears. Okay. Am I correct? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Sir. Move to the next slide. So that is called your train value is just the reverse of that speed ratio. So in the same way, you can also rewrite. Similarly, it can be proved that the above equation holds good if there are any number of intermediate gears. Yes or no? So the same thing I already mentioned. So following the conclusion drawn from the above equation, the speed ratio and the train value in a simple gear train of gears is independent of size and the number of intermediate gears. Yes or no? Is that speed ratio what you calculate or train value? Is it depend upon the number of intermediate gear? No, sir. No, That is sir. the Yes, sir. that is the conclusion I am writing here. That is the speed ratio and the train value in a simple train of gears is independent of size and the number of intermediate gear. आप समझे या नहीं रे सब? Yes, sir. So Yes, गियर sir. ट्रेन के ऊपर अभी जो क्वेश्चन आएगा आप लिख सकते हो तो आंसर कर सकते हो तो Yes, sir. वेरी Yes, sir. गुड. Yes, sir. Next, the second conclusion what you can see here, what we write, these intermediate gears are called idle gear. Okay? अरे जितना जो सब इंटरमीडिएट गियर जो यूज करते हैं उसको इडल गियर इसीलिए बोलते हैं कि आज दे इट डू नॉट अफेक्ट द स्पीड रेशियो और ट्रेन वैल्यू ऑफ द सिस्टम. समझ रहे हो नहीं? इसका नाम इडल गियर इसीलिए रखा गया. इडल मतलब कुछ नहीं, उसका कुछ इफेक्ट नहीं. ठीक. So as it do not affect the speed ratio or train value of the system, hence the intermediate gears are called as idle gear. Clear? Yes, sir. Yes. Yes, sir. So अभी मन में सवाल आ रहा होगा कि ये idle gear हम क्यों यूज कर रहे हैं. चलो let's to connect the gears when a large central distance is required. Get the point or not? To connect gears when a large central distance is required. Yes. And second purpose of providing intermediate gear or idle gear is that to obtain the desired direction of motion of the driven gear, clockwise or anti-clockwise. आपको ड्रिवन गियर कौन सा डायरेक्शन में घूमना चाहिए ये आपको मैटर करता है. ठीक है. तो इसके लिए आप उसको क्लॉकवाइज रोटेशन चाहिए तो आप कितने इंटरमीडिएट गियर इंसर्ट कर सकते हो. आपका एंटी क्लॉकवाइज चाहिए. अगर ड्रिवन गियर के साथ अगर आपका ड्राइविंग गियर के साथ अगर रोटेट करना चाहिए सेम डायरेक्शन में तो आपको एक इंटरमीडिएट गियर यूज करना है. अगर अपोजिट में होगा तो दो. इसी हिसाब से ऑड एंड इवन. ओके. तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस इंटरमीडिएट और इडल गियर. वी हैव टू प्रोवाइड इट व्हेन transmit power between two gears at a larger center distance and also to obtain the desired direction of motion. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कितना कंसेप्चुअल चीज डिस्कशन हो रहा है आप उसको समझो सब. सो कंपाउंड गियर ट्रेन क्या होता है देखो. वही सिंपल एंड कंपाउंड है हमारे सिलेबस में. ठीक. सो व्हेन देयर इज मोर देन वन गियर ऑन ए शाफ्ट एज shown in figure, it is called as a compound gear train. You can see here, this is the figure I will show you. So in previous section or in simple gear train, what we found, the idle gears in a simple gear train do not affect the speed ratio. However, these gears are useful in bridging the gap between driver and driven. Okay, so that's why we used idle gears. Sir, asina andre.
हाँ सुनो रे. So but whenever the distance between the driven and driver has to be bridged over by intermediate gears, and at the same time a greater speed ratio is required. Okay, suppose if you not only to bridge the gap between driver and driven gear, but also high speed ratio is demand. So then we can use this compound gears on intermediate shaft. Okay, so by providing compound gears on intermediate shaft, your speed ratio can be enhanced. So here you can see an intermediate shaft we have to insert two gears rigidly fixed to it so that it may have same speed. One of these two gear meshes with driver and other with driven. So come to the figure here, you can see. इधर होगा बी सी, समझे. ए जे हुआ आपका ड्राइवर जो शाफ्ट के ऊपर माउंट हुआ है, और ड्रिवन जो है डी आपका जो D6. ओके, सो ये दोनों के बीच दो शाफ्ट रहेगा. सो इन दिस केस ईच इंटरमीडिएट शाफ्ट हैज टू गियर्स. आपका जो इंटरमीडिएट शाफ्ट रहेगा उसको आप ऐसे याद रखो कि उसमें दो गियर रहेगा. ठीक है, rigidly fixed to it so that they have the same speed. One of these two gear meshes with the driver and other with driven. Okay, one is a mesh with driver and other with driven. You can see. Driver one, driver is the gear one. Are you able to see this diagram or not? You can see. Yes, sir. आपका जो फर्स्ट गियर वन का टीथ किसके साथ कनेक्ट हुआ है? देखो, जो इंटरमीडिएट शाफ्ट में जो गियर है, कंपाउंड गियर्स जो 2, 3, 4, 5 है, उसमें गियर वन किसके साथ कनेक्ट हुआ है? 2. 3 के साथ, है 2 के साथ. 2 के साथ, 2 के 2 के साथ, कनेक्ट, 2 के साथ कनेक्ट होता है. सो 2 जिस डायरेक्शन में रोटेट करता है, 3 भी उसी डायरेक्शन में रोटेट करता है या नहीं? यस सर, Yes, sir. तो आप देखो, अब 3 जाके जो इंटरमीडिएट शाफ्ट में जो दो गियर माउंट हुआ है, आपका देखो कि ड्राइवर का जो गियर जाके कनेक्ट हुआ है, इंटरमीडिएट शाफ्ट का जो गियर है, दो गियर उसमें से दो के साथ कनेक्ट हुआ है, और दो जिस डायरेक्शन में रोटेट करता है, गियर 3 माउंटेड ऑन द सेम शाफ्ट रोटेट आल्सो सेम डायरेक्शन. यस और नो? यस, Yes, sir. अभी यानी कि देखो, सर, वेरी गुड. अभी गियर 2, गियर 3 एंड गियर 4 ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है या नहीं? यस सर, Yes, sir. Yes, sir. Yes, यानी sir. कि गियर प्रिंसिपल पे काम कर रहा है. नहीं, फिर देखो वही जो इंटरमीडिएट शाफ्ट में जो दो गियर है 4 एंड 5 बोथ आर रोटेटिंग इन द सेम डायरेक्शन. Yes, sir. यस सर, सो जो सेकेंड इंटरमीडिएट शाफ्ट था जिसमें 4 और 5 गियर माउंट होकर रहा है, उसका 5th गियर जो हुआ वो किसके साथ कनेक्ट हुआ है? ड्रिवन के साथ कनेक्ट हुआ है. आप Yes, sir. समझे या नहीं? Yes, यस sir. सर, हाँ, तो अभी सिंपल गियर ट्रेन, कंपाउंड गियर ट्रेन में अभी अंतर क्या आप देखिए कि सिंपल गियर ट्रेन में आपके दो गियर के बीच, ड्राइवर और ड्रिवन के बीच, हम सिर्फ दो गियर ही रखते थे, दो इंटरमीडिएट गियर और इडल गियर रखते थे. मगर इधर हम कंपाउंड गियर ट्रेन में दो इंटरमीडिएट शाफ्ट हम इसमें इंट्रोड्यूस किए. सर वो समझे नीचे या नहीं? ABC क्या है सर? क्या ABC क्या है? ABCD ABCD शाफ्ट है. अरे ये ABCD कंपाउंड गियर ट्रेन का जो है ये शाफ्ट है. आप देखो, ए तो हो गया आपका ड्राइवर गियर जिसके ऊपर माउंट हुआ है, समझे? यस, अरे गियर 1 जिसके ऊपर है एक शाफ्ट के ऊपर होगा या नहीं? यस सर, Yes, sir. हमको पावर ट्रांसमिट करना है गियर 1 से गियर 6 तक, समझ रहे हो? यस सर, Yes, sir. यानी कि शाफ्ट ए से शाफ्ट डी तक, समझे? यस,
यस सर। तो इसीलिए हम शाफ्ट ए से डी के दूरी बहुत ज्यादा है या नहीं? है सर, ज्यादा। जी सर। तो उसी के बीच में हम दो इंटरमीडिएट शाफ्ट उसमें इंट्रोड्यूस किए, समझे? जो इंटरमीडिएट शाफ्ट हम इंट्रोड्यूस किए, दो इंटरमीडिएट शाफ्ट में दो दो गियर माउंट होकर रहा है, देख रहे हो या नहीं? यस यस सर। सर। या सर वो ड्राइवर जो घूमेगा, वो ड्राइवर हाँ, आप ड्राइव। देखो, 1 मिनट देखो, उसके बाद पूछना। ओके सर। सर वॉइस नहीं आ रहा। और कनेक्शन छूट गया था। बोलो, रुको। सर वो फिगर में जो ABC क्या डॉट करना चाहता है वैसे, फिगर दिखा के। ए बी सी डी वो होता है, शाफ्ट होता है। एक्चुअली आप क्या देख रहे हो, आप फ्रंट से देख रहे हो, सब कुछ शाफ्ट वर्टिकली रखा गया है, आप उसको देख रहे हो, समझे? एक्चुअली हम, रुको, हम उसको एक वीडियो दिखाते हैं आपको, जस्ट वेट करो, लाइन में रहो। अरे ढंग से समझो, आपको एक बार समझ जाओगे ठीक से तो आपको जरूरी नहीं होगा, आप नहीं समझोगे तो। रुको, हम इसका डायग्राम दिखाते हैं, ओके? कैसे काम करता है कंपाउंड रिएक्टर। हसन, यस सर। समझ रहे हो तो? हाँ सर। नेटवर्क थोड़ा अभी ठीक रह रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा था पहले इसमें पढ़ाना। चलो, सब कोई ठीक हो तो, हेल्थ? यस सर। यस सर। यस हम्म, सर। यस सर। यस सर। यस सर। वही चाहिए। सर कब तक खुलने का चांस है कॉलेज? ओ, आप वेट करो, होगा, पता चल जाएगा तुरंत। अभी वही सोच रहे हैं, दिसंबर फरवरी बीच में आ जाएगा। जस्ट वेट, आई एम कमिंग। एक्चुअली आई वांट टू क्लियर योर। देखो, एक्चुअली मैं डायरेक्ट यूट्यूब से लिंक कर रहा हूँ, जो आपका है। जस्ट वेट, सो फार मिल गया।
ये होता है इंटरमीडिएट शाफ्ट। देखो ये जो बीच में जो इंटरमीडिएट शाफ्ट रखा गया है उसमें दो दो गियर से, ठीक है, देख रहे हो या नहीं? यस सर, यस सर। यस सर। हम्म। आप देखो ये ग्रीन का देखो टीथ किसके साथ कनेक्ट हुआ है? इंटरमीडिएट शाफ्ट जो है, फास्ट इंटरमीडिएट शाफ्ट का जो लार्जर गियर है उसके साथ कनेक्ट, जिस डायरेक्शन में रोटेट करता है वो इंटरमीडिएट शाफ्ट का वो जो छोटा गियर है उसी डायरेक्शन में रोटेट करता है, जो कि सेकंड इंटरमीडिएट गियर का शाफ्ट का बड़ा गियर के साथ है, नहीं? तो यस सर। आप उसको घर में भी देख सकते हो। आप इंटरनल गियर देखोगे, इंटरनल गियर भी है एनिमेशन, आप एनिमेशन घर में देख सकते हो यूट्यूब में। बाकी चीज हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक। अरे थोड़ा बहुत आइडिया आ गया तो हाँ सर। यस सर। यस सर। ठीक। ये टोटल गियर ट्रेन है मेरे पास। ये देखो इसी तरह का भी आपका कंपाउंड गियर ट्रेन दिखता है। आप उसका जो स्पीड रेशियो अगर आप और ट्रेन वैल्यू अगर डिराइव करोगे तो देखो कैसे आता है। जैसे सिंस गियर 1 and 2 आर कंटैक्ट विद ईच अदर वी कैलकुलेट N1/N2 सिमिलरली। से आप कहाँ से हो पहले बताओ? तो जंगल से, आसाम से। तू तो बिहार असम का से? जंगल से। तू तो बिहार का जंगल से। कर नहीं कर सकते। क्या पहले प्रीतम बोल वो रहे हो बोल तुम? रहा था। सर पहले वो बोल रहा था ताबीज। नहीं नहीं, सुनो, अरे सुनो, हर जगह पर आपका नेटवर्क इश्यूज होगा, बीच बीच में देख रहे हो कभी कभी एक दो क्लास में भी मेरा भी छूट जाता है कनेक्शन, डिसकंटिन्यू हो जाता है कनेक्शन। तो आप सब में इसको सब एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर आज इम्प्रूव नहीं हुआ है नेटवर्क ने, क्या किस रीजन क्या है हमको तो मालूम नहीं, फिर भी आप ट्राई करो सब चीज़, हम नोट शेयर कर हाँ लेंगे। सर। अगर कुछ दिक्कत होगा तो आप फोन कर लेना, भी हम बता देंगे, ठीक। हाँ सर। ओके। सो नोट्स भेज गियर दीजिएगा। वन, अरे ये नोट्स तो सब ही पढ़ा रहे हैं, आपको भेज देंगे। एक बार खत्म होगा तो मॉड्यूल वाइज आपका मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 आपके पास है तो यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। तो उसी से पढ़ाई करो। मॉड्यूल 3 वही कल या परसों भेज देंगे। आपका 2 तारीख को क्वेश्चन आ रहा है सबसे मिलके, मॉड्यूल 1, 2, 3। सो ये देखो हम गियर जो स्पीड रेशियो अभी डिराइव कर रहे हैं, train value for your compound gear train. So gear 1 and 2 are in contact with each other. So speed ratio calculated from the given expression. N1/N2 you will find T2/T1. Similarly gear 3 and 4. Similarly for gear 4, 5 and 6. So if you find speed ratio for compound gear train, you can obtain it by multiplying equation 1, 2 and 3. So finally you will get N1/N2 into N3/N4 into N5/N6 is equal T2/T1, T3/T4, T6/T5। So ये हो गया आपका N1/N6। Suppose since gear 2 and 3 are mounted on the same shaft, आपका N2/N3 है, 4 and 5 are mounted on same shaft, so N4 equal to N। चलो डायग्राम देखो रे, जहाँ पर लिखा हुआ है उसमें शाफ्ट गियर 2, 3 एक ही शाफ्ट में है या नहीं? यस सर। So speed of the gear 2 is equal to speed of the gear 3, and similarly 4 is equal to 5. We are doing the same thing. I put it in the expression. So finally we will get N1/N6 is equal to T2 into T4 into T6 divided by T1, T3, T5। सपोज आपसे कोई अगर पूछ लेगा कि सर वो N2 अगर N3 हो गया तो T2 इक्वल टू T3 होगा क्या? तो चलो आपके डाउट्स क्लियर कर लेते हैं। आप देखो N2 इक्वल टू N3, N4 इक्वल टू N4 होगा क्योंकि वो सेम शाफ्ट के ऊपर माउंट हुआ है। मगर आप देखो
जो गियर 2 और गियर 3 में नंबर ऑफ टीथ सेम है क्या? नो सर। वाला वैल्यू इक्वल नहीं होगा, समझ रहे हो? यस सर। यस सर। हाँ, sir. वो वैसा ही रहेगा, नंबर ऑफ टीथ डिफरेंस, सो टी स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ टीथ, सो फाइनली योर n1 by n6 इज इक्वल टू दिस वन। जो आपका एक्सप्रेशन के हिसाब से चेंज होगा, तो आपका देखो एडवांटेज क्या है कंपाउंड गियर ट्रेन का, कि जो सिंपल गियर ट्रेन के ओवर, कि यहाँ पर मच लार्जर स्पीड रिडक्शन होता है। आप एक जो वीडियो देखे दिखाया अभी यूट्यूब में, आप जो कंपाउंड गियर ट्रेन का देख रहे हो, लास्ट वाला गियर कितना स्लो मूव कर रहा है या नहीं? अरे स्लो मूव कर रहा था या स्पीड घूम रहा था? यस, स्लो कर रहा था। स्लो। यानी कि वहां पर स्पीड रिडक्शन हो रहा है या स्पीड इंक्रीज हो रहा है? हाँ, स्पीड रिडक्शन हो रहा है। So a much larger speed reduction from the first shaft to last shaft can be obtained with small gears, and if a simple reduction, the last gear has to be very large. अगर यही वाला चीज आप इतना गियर रिडक्शन करने के लिए सोच रहे हो आपका सिंपल गियर ट्रेन यूज करके, तो आपका लास्ट जो गियर होता है वो बहुत बड़ा होना चाहिए, समझ रहे हो? जो कि आप बड़ा भी नहीं बना सकते, वो अनइकोनॉमिकल है, हाँ, इनकन्वीनियंट है, हाँ। So therefore, usually speed reduction of 7 to 1. ओके, आप यहाँ पर देखो स्पीड रिडक्शन आपका अगर 70 आरपीएम में घूम रहा है, गियर ट्रेन खत्म हो जाएगा। अभी ब्रेक बचा है, ब्रेक अगले क्लास को पढ़ेंगे, ब्रेक क्लच, और 2-3 लागेगा क्लास, क्योंकि इसमें है बहुत सारे चीज पढ़ा देंगे ठीक से। ठीक सर कम यही वाला है? यस सर। हाँ, नहीं सर, वो स्क्रीनशॉट लेना था। ओ जस्ट वेट वेट वेट, यही वाला? यस सर, ले लिया सर, ले लिया। ठीक, थैंक यू सर। लाइन में रहो, अटेंडेंस लेते हैं, लेफ्ट नहीं होना है। सिंपल गियर ट्रेन के बीच में, गियर ट्रेन तो क्या है, गियर है, आपको तो डिफरेंशिएट कर पाओगे गियर और गियर ट्रेन के बीच में, और सिंपल और कंपाउंड गियर ट्रेन भी आप समझ लिए होंगे।